Very precise, friends. The cat is out of bag. And the stand which the BJP has been holding for so many years very consistently finds vindication today. And the vindication comes from the horse's mouth. When the Defence Minister of Pakistan, Mr. Khwaja Asif himself, unequivocally states that the government in Islamabad is on the same page as Congress and National Conference and its allies, including the PDP, and that the Kashmir approach of these two so-called mainstream Kashmir-centric parties, and along with them the Congress party, finds its inspiration from the strategies designed, planned in Islamabad. BJP has always held the view that the perpetrators, the facilitators of terrorism, of secessionism, of separatism are equally culpable as the separatist himself or the terrorist himself or the secessionist himself. So if we go by that analogy, when the Defence Minister of Pakistan says that they are in league with Congress and its allies in all these issues which lead to separatism or soft separatism, and also including their intent of getting back Article 370 if at all that is possible through them, I think the Congress and its allies, the National Conference, the PDP, deserve to be held equally culpable. And they not only owe a public explanation to the people of this country, to this nation, but BJP may also find out means about acting against them under the rule of law. And how best, because this amounts to treason, this amounts to sedition. And if you see this in the entire perspective and you recall the sequence of events, I think that will abundantly prove what BJP has been consistently maintaining from time to time. Early 80s and even prior to that, you had the National Conference chief frequently visiting Pakistan, holding parleys with Amanullah Khan, the person known to be the prime strategist of the so-called Azadi. After that, the 1987 election is a history in itself. I don't have to reiterate how it was conducted. And when the things started getting out of control, the Congress president, the Congress chief minister, Dr. Farooq Abdullah, is on record having told his cadre to go to Pakistan and get themselves trained in arms. Later on, you found a long spell of terrorism, unrest in the Kashmir Valley. And it's not a simple coincidence that there would be a polling day scheduled in the Kashmir Valley and the Hartal call would be announced from Islamabad, and also a boycott call. So that prompts us to believe that all this was done as a design, so that the polling could be cut down, reduced to 8%, 10%, and therefore those who were taking cues from Islamabad, the governments to be in Islamabad, would get themselves elected with a confined vote turnout. And that's how it carried on for 30 years. And I have been on record even earlier saying that militancy had created a nexus, and these so-called Kashmir-centric political parties were part of that nexus because it helped them to sustain their rule in the valley in Jammu and Kashmir generation after generation. So it is polity, militancy, and the strategists in Islamabad who have been operating for decades together, and now they have come out open. But since it's also the election time, and I would on behalf of BJP say that we would not allow Jammu and Kashmir to be thrown back into the same harakiri from which Prime Minister Modi has pulled it out after a lot of effort, a lot of commitment, a lot of conviction. There's a sense of relief in the Kashmir Valley. The atmosphere is opened up. The democratic aspiration has found its resurgence. You see the kind of voter turnout which is happening. You see the kind of
candidate number that is taking place. We have seen those times when the returning officer would reject all the nomination papers and just select one or accept one from the ruling party and declare the candidate uncontested. And then we moved on to the next few decades when there would be 10-12% of, and all this happening with the connivance of Islamabad. And if there's a turn of events now, I think it's the responsibility of BJP under Prime Minister Modi and also in the larger interest of the nation not to allow that to happen. Secondly, the youth of Jammu and Kashmir, including the Kashmir Valley, have moved on. And they do not want to miss the bus. They have seen how in the last 10 years Prime Minister Modi has unleashed umpteen number of opportunities, avenues for them. We were just about 350 startup, today we are 1.5 lakh or more. In Jammu Kashmir itself, till about 5 years back, we were only 30 startups. Now we are at 850 to 900. And the new avenues, the new resources which remain unexplored in Jammu and Kashmir are now finding a potential for employment. Even the 100 days that we observed just 2 days back, one of the important features of the third term of the Modi government, the first 100 days, was to earmark an amount of rupees 26,800 crore to create industrial nodes which would indirectly or directly generate job opportunities for as many as 40 lakh youth. So India today is a happening country, one of the most favorite destinations in the world. And there is a design to deprive Jammu and Kashmir of the benefits that are accruing to the rest of the world. And therefore, I think it's time now not only to explore them but also to have a sustained campaign against this mischievous design. And now that it is abundantly clear how it has been happening over the years and all the events that I have recounted to you, beginning from the parleys that were being held in Islamabad by the National Conference leaders up till today. And there is a competitive separatism today which is being witnessed among the so-called mainstream political parties of Kashmir, which again doesn't augur well. And that also finds its echo in the statements being made by Rahul Gandhi on the foreign soil, when he finds nothing wrong in abusing India and also going to the extent of abusing the Prime Minister of India. कहा गया है कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही है और शगुन परिहार ने भी स्टेटमेंट दी। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? नहीं, जब किसी भी इस तरह की वारदात होती है और जो करते हैं वो अपनी पराजय का संकेत देते हैं। क्या लग रहा है, ये डर है? पराजय का संकेत। जब लग रहा है कि हम हारे हैं तो इस तरह की हरकतें होती हैं। जो जीत रहा है कैंडिडेट वो कभी इस तरह की हरकत नहीं करता। पीडीपी का कहना है कि बुर्का उठा कर वो आइडेंटिफाई किया जा रहा था। ये मीडिया का कहा कि देयर इज अ डीप स्टेट बिहाइंड हिंडनबर्ग जो टारगेट कर रही है अडानी, एलआईसी और एसबीआई को। इस नजरिए से नहीं, अभी हम फिलहाल इसी विषय को कर लेते हैं, उसके बाद आपके साथ बैठेंगे। सर, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं प्रचार के लिए। वहीं कल हमने देखा कि सचिन पायलट ने ये कहा है कि यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि विकास की बातें बीजेपी कर रही है वो बड़ी धीमी गति से हो रही है। जिस प्रगति से है आने वाले कई साल लग जाएंगे उनको पूरा हो। मुझे लगता है उसकी आवश्यकता ही नहीं है उसका उत्तर देने की। आप पत्रकार मित्र स्वयं आप जा कर के देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से कि क्या पहले था और क्या अब है, क्या 2014 की से पहले की क्या स्थिति थी और अब क्या है। और बहुत ज़्यादा अगर लंबी बात करेंगे तो सारा दिन लग जाएगा। मैं आपको केवल एक उदाहरण देकर छोड़ूंगा क्योंकि आप सब विश्लेषण करिए। यहाँ रेलगाड़ी सन 1972 में पहुँची थी। 50 साल के बाद मोदी जी के आने के बाद आज कश्मीर घाटी जा रही है। तो क्या कर रहे थे पायलट साहब और उनके साथी? क्योंकि ये अधिकतर अपना समय, अपनी ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में लगाते रहे और आज भी राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर वही काम कर रहे हैं। भारत को गाली देनी, मोदी सरकार के बारे में अनाप शराब कहना। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की है, अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 के जिक्र की बात की है और तमाम नेता चाहते हैं कि 370 वापस आए। क्या लगता है कि सबसे पहला तो महत्वपूर्ण बात यह है कि 370 को वापस लाना कौन चाहता है? ये वही तथाकथित नेता जो 370 की आड़ में या पाकिस्तान से मिली भगत की आड़ में अपना वंशवाद पुष्ट दर पुष्ट बढ़ाते रहे। मैंने तो कश्मीर में भी कहा, मीडिया मित्रों से भी मेरा निवेदन है, आप एक सर्वे करिए, आम गली कूचों में चलते हुए इंसान से श्रीनगर में पूछिए, हो सकता है खौफ के कारण खुल के ना बात कर पाए। एक एनोनिमस सर्वे करके देखिए। कश्मीर का कोई व्यक्ति भी नहीं चाहेगा कि 370, क्योंकि वो अब समझ गया कि 3 पीढ़ियाँ और 3 दशक
उसके ज़ाया हो गए इस झांसे में, इस भ्रम में, और इसका लाभ केवल और केवल वो कुछ एक परिवार और कुछ एक वर्ग लेते रहे जो इसकी आड़ में अपनी सत्ता बनाए रखे। और वो सत्ता की कड़ी कहाँ जुड़ती है वो आज जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा उससे बहुत स्पष्ट भी हो गया और सिद्ध भी हो गया। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि एमसी कहती है कि अलगाववादी इंजीनियर रशीद को बीजेपी ने कश्मीर की सियासत का माहौल जो है प्रभावित करने के लिए लाया गया, और उसका ये भी रोप है कि इंजीनियर रशीद जो है बीजेपी की बी पार्टी है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये बी पार्टी भी वही लोग कहते हैं जिनको अपनी पराजय नज़र आ रही होती है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो पार्टी है जो बीजेपी के साथ गठबंधन में रही, एनडीए के साथ गठबंधन में रही, और जो आज बयान आया है रक्षा मंत्री पाकिस्तान का, उसमें सबसे पहले नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही लिया गया है। तो हम चाहेंगे पहले वो उस बात का उत्तर दें कि क्या वो अपना क्यों या जो अपना यहाँ मंसूबा बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, उसकी चर्चा, उसकी समीक्षा और उसके ऊपर मंथन इस्लामाबाद में होता है क्या? और यही बात हम कहते रहे कई वर्षों से। हमारे प्रेस के मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। Music to the ears of the rulers that be in Pakistan, and therefore I think we would today, as the responsible members of BJP, call upon the countrymen that we are there to take up the cudgels against these enemies within, and we would not let them ever succeed in their designs, whatever may be the price that we may have to pay for that. Thank you. ये प्रश्न करके हमें उस विषय से भटका रही हैं जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कृपया करके अभी हम उसी विषय पर चर्चा करें। रक्षा मंत्री का जम्मू कश्मीर के चुनावों में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, खासकर विपक्षी पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर क्या? यकीनन, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर पिछला घटनाक्रम देखें जो मैं जिसकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहा था, तो आज ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये षड्यंत्र ये आज का नहीं है, ये कई वर्षों से चल रहा है। 80 के दशक में, 70 के दशक में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जाया करते थे, अमानुल्लाह खान के साथ बैठकें करते थे कि किस तरह से तथाकथित आज़ादी का मंसूबा बनाया जाए। फिर 1987 का जो चुनाव हुआ है उसके विषय में कुछ ज़्यादा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं कि उसके पश्चात क्या हमें नतीजे भुगतने पड़े। और फिर जो लंबा एक अंतराल रहा आतंक का, आपको आप ये अगर सोचेंगे तो आपको स्वयं बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी कि जिस दिन भी कश्मीर घाटी में चुनाव की तिथि होती, हड़ताल का आह्वान पाकिस्तान से होता था और दुकानें यहाँ बंद होती थी, और नतीजा ये होता था कि 8-10% मतदान होता और उनके चहेता लोग विधायक भी बन जाते, सांसद भी बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते। और ये मैं कहता रहा, काफ़ी वर्षों से हमारा ये मानना है कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन मिलिटेंसी, द सो कॉल्ड कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज विच कॉल देम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, एज वेल एज द पास दैट बी इन इस्लामाबाद। और ये इनका मंसूबा, इनकी स्ट्रेटजी वहाँ से बनती है। और हमारा तो ये भी कहना है, जैसे हम कहते रहते हैं कि आतंक को बढ़ावा देने वाला है या आतंकी के लिए एक सुविधाजनक वातावरण की रचना करने वाला व्यक्ति या वर्ग भी उतना ही जिम्मेवार है, दोषी है आतंक के लिए, जितना कि आतंकवादी स्वयं। और यदि उस मंत्र का पालन करना है तो हम तो ये भी कहेंगे कि जिम्मेवार हैं उस आतंक के लिए, उस मेहम के लिए जिसका जम्मू कश्मीर को इतने वर्षों तक सामना करना पड़ा। और अब ये जो कि चुनाव का समय है, ये बात खुद वाज़ेह हो गई जब वहाँ के रक्षा मंत्री स्वयं आकर के कहते हैं कि चाहे वो 370 को लेकर के है, चाहे दूसरे विषयों को लेकर के है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक मत से एक ही धारणा रखते हैं। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, हम संकल्पित है कि हम इस तरह की पार्टियों को पुनः जम्मू कश्मीर को उस घिनौने समय में धकेलने नहीं देंगे जिससे बड़ी कठिनाई से मोदी जी ने बड़ी निष्ठावान ढंग से, बड़े परिश्रम से निकाला है।